I welcome you all to the fourth webinar of StudyMate and MedExam Expert. My name is Dr. Mawaz Aslam and I am the mentor for ENT. The topic of our today's webinar is paranasal sinuses. Paranasal sinuses is a very important topic as far as ENT FCPS-1 exam is concerned. We will be starting with some past CPSP MCQs. Then we will go on to study the anatomy, the physiology, the histology of the paranasal sinuses. So this is the first CPSP MCQ. So just to test your knowledge, which of the following sinuses are usually present at birth? A is sphenoid and frontal, B is maxillary and ethmoid, C is maxillary and sphenoid, D is sphenoid and ethmoid. जो लोग जूम पे हैं वो चैट बॉक्स में लिखते हैं और जो फेसबुक लाइव पे हैं वो कमेंट्स में काइंडली कमेंट कर दें. Okay, I can see some comments. Dr. Faria has commented C. Can see D, B, A. Okay, so इन MCQs को हम एंड पे दोबारा डिस्कस करेंगे. Next MCQ, CPSP MCQ is maxillary sinus opens into A is superior meatus, B is middle meatus, C is inferior meatus and D is nasal septum. तो आपका क्या ख्याल है कि इसका क्या अच्छा ऑप्शन होना चाहिए, A, B, C या D? जूम वाले चैट बॉक्स में लिखते हैं, टाइप कर दे, और जो फेसबुक पे लाइव हमारे साथ हैं दे कैन कमेंट. Okay, so third CPSP MCQ is which paranasal sinus is the first to develop in intrauterine life? A is maxillary sinus, B is frontal sinus, C is sphenoid sinus and D is ethmoid sinus. So whatever option you think is correct, please type it. So the fourth CPSP MCQ is posterior ethmoid sinus drains into A is superior meatus, B is middle meatus, C is inferior meatus, and D is sphenoethmoidal recess. Okay, I can see some answers. So we will be discussing these MCQs later on. So to begin with, first we will be seeing the anatomy of the paranasal sinuses. Paranasal sinuses are basically air-containing cavities in the skull. Sinuses mean air-containing cavity, and paranasal means around the nose. So paranasal sinuses means
air containing cavities in skull. We basically have 8 total paranasal sinuses, which are divided into 4 pairs of the paranasal sinuses. Number 1, we have the frontal sinus. Number 2, we have the ethmoid sinus. Then we have the maxillary sinus, and we have the sphenoid sinus. These paranasal sinuses are divided into 2 groups. We have the anterior group of the sinuses and the posterior group of the sinuses. पहले हम देखेंगे कि इंटीरियर ग्रुप में कौन कौन से पैरानेजल साइनसेस होते हैं. अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, इसके जो आगे होता है इसको हम कहेंगे इंटीरियर ग्रुप, और इस लाइन के पीछे वाले पार्ट को हम कहेंगे पोस्टीरियर ग्रुप. इसमें अगर आप देखें, इंटीरियरली वी हैव द मैक्सिलरी साइनस, वी हैव द फ्रंटल साइनस, and we have the anterior ethmoid sinuses. Whereas in the posterior group we have the posterior ethmoid sinuses and we have the sphenoid sinus. इंटीरियर ग्रुप की जो कॉमन बात है वो ये है कि all of them open into the middle meatus. In the next slide we will be looking in detail what do we mean by the middle meatus. Okay, posterior group में posterior ethmoid open into the superior meatus, whereas the sphenoid opens into the sphenoethmoidal recess. So quickly revising this slide, paranasal sinuses mean air containing cavities in skull around the nose. We have 4 pairs of the paranasal sinuses. These are divided into 2 groups, anterior group and the posterior group. Anterior group of the paranasal sinus include maxillary, frontal and anterior ethmoidal sinuses. Whereas the posterior group of the paranasal sinus include posterior ethmoidal and the sphenoid sinus. Okay, so this is a very important slide. I can confidently say that you will get at least 2 to 3 MCQs in your ENT Part 1 exam from this slide. तो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है lateral wall of the nose. Lateral wall of the nose में 3 turbinates होते हैं, superior, middle और inferior turbinate. हर टर्बिनेट के नीचे एक ओपनिंग होती है जिसको मिएटस कहते हैं. इंफीरियर टर्बिनेट के नीचे इंफीरियर मिएटस होते हैं, मिडल टर्बिनेट के नीचे मिडल मिएटस होते हैं और सुपीरियर टर्बिनेट के नीचे सुपीरियर मिएटस होते हैं. जबकि सुपीरियर टर्बिनेट के ऊपर वाला जो एरिया होता है उसको कहते हैं स्फीनोएथमोइडल रीसेस. I hope this is clear कि we have 3 turbinates on the lateral wall of the nose, superior, middle and inferior. हर टर्बिनेट के नीचे जो ओपनिंग होती है उसको कहते हैं मिएटस. सुपीरियर के नीचे सुपीरियर मिएटस, मिडल के नीचे मिडल मिएटस और inferior टर्बिनेट के नीचे inferior मिएटस होगी. Whereas above the superior turbinate जो एरिया होता है उसको कहते हैं sphenoethmoidal recess. अब जो sphenoid sinus होता है it opens into the sphenoethmoidal recess. और जो posterior ethmoidal air cells होते हैं they open into the superior meatus. Whereas middle meatus में कौन से sinuses open होंगे? Yes, you're right कि जो anterior group of paranasal sinuses हैं all of them collectively open into the middle meatus. So anterior group contains the maxillary sinus, frontal sinus and the anterior and the middle ethmoidal air cells. And lastly, the nasolacrimal duct
opens into the inferior meatus. So quickly revising the lateral wall of the nose, we have three turbinates, three meatuses, and fourth we have the sphenoethmoidal recess. Sphenoid sinus opens into the sphenoethmoidal recess. Posterior ethmoidal air cells open into the superior meatus. Anterior group of the paranasal sinuses open into the middle meatus. And the nasolacrimal duct drains into the inferior meatus. Next, we will be seeing the maxillary sinus in detail. Maxillary sinus is the first to develop. Okay, it is the largest paranasal sinus with a volume of approximately 15 milliliter. Maxillary sinus is also known as maxillary antrum or the antrum of Highmore. High means ज़्यादा and more से भी मतलब होता है ज़्यादा. So maxillary sinus is the largest paranasal sinus and it reaches adult size by the age of 15 years. इसको याद रखना बहुत आसान होता है by 3 F's. First to develop 15 milliliter and it reaches adult size by the 15 years. So first 15 milliliter and 15 year. अब अगर आप मैक्सिलरी साइनस की लोकेशन देखें तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ईएनटी एंड डेंटिस्ट्री कैंडिडेट्स कि जो भी मोलर टीथ की रूट्स की इन्फेक्शन होगी उसकी जब भी कॉम्प्लिकेट होता है तो वो यूजुअली स्प्रेड करता है टू द मैक्सिलरी साइनस. Next we have the ethmoid sinus. Ethmoid sinus are divided into two groups. The anterior and the middle ethmoid are part of the anterior group of the paranasal sinuses, whereas the posterior ethmoid is part of the posterior group of the paranasal sinuses. These are second to develop in the intrauterine life. Okay, so this is a very important table which has been taken from Dingra. इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन बड़ी कंसाइज फॉर्म में डिस्प्ले की गई है. We have four sinuses: maxillary, ethmoid, sphenoid and the frontal. तो इसका एक निमोनिक है. आप में से जो भी फुटबॉल के फैंस हैं या फिर जो फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल का एक प्लेयर है मेसी. ये एक निमोनिक है याद रखने के लिए डेवलपमेंट ऑफ द पैरानेजल साइनसेस के लिए कि MES स्टैंड फॉर मेसी and F is for fan. So the mnemonic is Messi fan. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. जो पहले दो हैं M और E, maxillary and ethmoid, they are present at birth. As we have already discussed that maxillary sinus is the first to start developing and it reaches the adult size by the age of 15 years. As it is the first to start developing, the maxillary sinus की एक्सरे अपीयरेंस फर्स्ट आती है. सबसे पहले जो एक्सरे पे अपीयर होता है maxillary sinus by the age of 5 months. ये इसका चौथा F बन जाता है. It is the first to start developing. It is approximately 15 milliliter in size. It reaches adult size by the age of 15 years and it appears on X-ray by the age of 5 months.
जो फ्रंटल साइनस होता है ये सबसे आखिर में डेवलपमेंट इसकी स्टार्ट होती है। ये एडल्ट साइज सबसे एंड पे रीच करता है एंड इट अपीयर्स ऑन द एक्सरे लास्ट एट द एज ऑफ 6 years. So frontal means further. F is for frontal and F is for further. So you can remember that frontal sinus is the last to start developing and it reaches the adult size in the end. अब स्फीनॉइड साइनस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ढिंगरा में लिखा है इट इज़ एब्सेंट एट द बर्थ, वेयर एज ग्रेज और कुछ बुक्स में लिखा होता है कि इट इज़ प्रेजेंट एट द बर्थ. सो दिस इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग. लेकिन असल में होता क्या है कि जो बर्थ पे देर इज़ अ स्मॉल कैविटी which starts pneumatization by the age of 2 years and it starts appearing on the X-ray by the age of 4 years. तो जो कैविटी होती है उसको हम साइनस नहीं कह सकते, हम उसको स्फीनॉइड कैविटी तो कह सकते हैं but we cannot say the sphenoid sinus before it has pneumatized. So to quickly revise, MESF stand for maxillary, ethmoid, sphenoid and frontal. इसका mnemonic हो जाएगा messy fan. The first two maxillary and ethmoid are present at birth, where the last two are absent at birth. सबसे पहले मैक्सिलरी साइनस की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और सबसे पहले एक्सरे पे भी यही अपीयर होता है. लास्ट में फ्रंटल साइनस की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और एक्सरे पे सबसे आखिर में फ्रंटल साइनस ही अपीयर होता है. Moving on to the physiology of the paranasal sinus. Paranasal sinuses का पहला फंक्शन होता है कंडीशनिंग ऑफ द इंस्पायर्ड एयर. एयर को ह्यूमिडिफाई और उसको वार्म करने के लिए पैरानेजल साइनसेस का रोल होता है. नंबर 2, दे आर इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस टू द वॉइस. इसीलिए आप अगर देखें जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस के पेशेंट्स होते हैं दे हैव अ हाइपो रेजोनेंट वॉइस. यहाँ पे नेजल पोलिपोसिस के जो पेशेंट्स होंगे दे हैव अ हाइपो रेजोनेंट वॉइस. Third function of the paranasal sinus is thermal insulation to protect the contents of the orbit and the cranium from the temperature variations. As you all know that air is a bad conductor of temperature. तो जो ब्रेन और आई के इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ये थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, हीट और कोल्ड दोनों से उनको बचाते हैं. Fourth is it helps in the lightening of the skull bones because air is lighter than the solid. Paranasal sinuses buffer against the trauma to the brain and they are involved in local immunological defense mechanism. Okay, so we have done the anatomy and the physiology of the paranasal sinus. And in this last slide, we will be looking at the histology of the paranasal sinus. Paranasal sinuses are basically respiratory type of epithelium, which is ciliated columnar epithelium with goblet cells. यहाँ पे अगर आप देखें इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि पैरानेजल साइनसेस के एपिथेलियम कौन सी किस्म की होती है. ये वही होती है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की एपिथेलियम होती है, विच इज सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स. अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सिलिया, जो ये स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. सिलिया के ऊपर एक म्यूकस लेयर भी है.
उसके नीचे अगर आप देखें तो देर आर कलमनर एपिथेलियल सेल्स, और इनके बीच में ये वाला जो है, दिस इज द गॉबलेट सेल्स विच सेक्रेट्स द म्यूकस। तो हिस्टोलॉजी ऑफ द पैरानेजल साइनसेस क्या होगी सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स। Okay, so we will be discussing the CPSP MCQs जो हमने आपसे शुरू में पूछे थे. Now I would request everyone to kindly comment or type in the chat box. Option number B, sir. Okay, so which of the following sinuses are usually present at birth? A is for sphenoid and frontal. B is maxillary and ethmoid. C is maxillary and sphenoid, and D is sphenoid and ethmoid. So what do you Sir, think B. is correct answer? B. Okay, kindly type or in the chat or the comment box so we can give everyone an equal chance to answer. Yes, so I can see everyone is typing B. So you're right. इसका आंसर B ही होना चाहिए as by the mnemonic MESF. So M and E, which are maxillary and ethmoid, are present at birth. So for the second MCQ, maxillary sinus opens into superior, middle, inferior meatus or the nasal septum. So what do you think is the correct answer? Is it A, B, C or D? Kindly comment. Okay, so majority is correct again. Maxillary sinus opens into the middle meatus. As we have discussed that it is part of the anterior group, and all the sinuses of the anterior group commonly open into the middle meatus. Third MCQ is, which paranasal sinus is the first to develop in the intrauterine life? A is maxillary, B is frontal, C is sphenoid, and D is ethmoid sinus. Okay, again, majority is correct. The answer is A. Maxillary sinus is the first to develop in the intrauterine life. Fourth MCQ is, posterior ethmoid sinus drains into superior meatus, middle meatus, inferior meatus, or the sphenoethmoidal recess. What do you think is the correct answer? I can see is it A, B, C or D? Okay, again, majority is correct. The answer is A. Posterior ethmoid sinus drains into the superior meatus, whereas the sphenoid sinus, it is draining into the sphenoethmoidal recess. So this brings us to the end of the fourth webinar on the paranasal sinuses. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपकी जो भी फीडबैक है वो आप काइंडली टाइप कर दें.